Okay. Okay, so let us start. Okay, so first of all, just tell me, how do you define the viscosity of the fluid? Sir, the viscosity of a fluid is the resistance that a layer of fluid uh, uh, will be a layer of fluid will have under if there is a like if two layers of fluid are flowing and if one is at rest and because of the uh, displacement means the upper layer will try to move the lower layer forward, and this Hmm. property is called viscosity. And how does the viscosity varies with the temperature? So for liquids, the viscosity decreases with increase in temperature, and for gases, the viscosity increases with increase in temperature. Why so? What is the So reason? in gases, viscosity is due to the momentum transfer, and with increase in temperature, the momentum transfer increases. In the kinetic theories gases, it is under root T, proportional to root T. But in Okay. liquids, the forces of interaction become weaker with increase in temperature. Okay. Okay, how do we control the viscosity of the lubricating oils? Because if you see when the engine is running at a very high speed, okay, so with the increase in temperature, the viscosity is going to be decreased. Okay, Yes, but due to the decrease in viscosity, there can be a metal to metal contact. yes, sir. Then how do we make ensure that the sufficient viscosity should be maintained at a high temperature in I, lubricating oils? I think, sir, there are cooling provisions provided to decrease the temperature Hmm. of the fluid. Of Okay, liquid. that's the only method. But if you apply the coolant all over the distance and arrangement, then what will happen? There will be a loss of energy. Yes, sir. Then So how can I'm we not able make? to read any other method. Okay. And what is Bernoulli's equation? Sir, Bernoulli's equation is a energy conservation equation. This takes into account the forces of gravity and the pressure forces. Okay, that is okay. And what is surface tension? So the surface tension is due to the unbalanced forces on a surface of a liquid film. It is the work done to increase the unit to increase the energy by unit area. Okay. Okay, but do you understand by the simple head term, which we normally study in the fluid mechanics, like we study the pressure head, kinetic head, dynamic head. What is the meaning of this head? Sir, this head means the amount of work required to like put water on certain height means the pressure exerted by a certain h height of water is the head. Let us suppose if there is a pipe. This Let us suppose if there is a pipe and the fluid is flowing at a very high velocity. And if I provide you the information that the velocity head in the pipe is 5 meter, then what information you can interpret from this? sir, if the if we put a pitot tube at that front, if there is like 5 meter velocity is there in this direction, we put a pitot tube. The water level in the pitot tube will rise to 5 meters, sir, Okay. Okay, that is okay. Okay, explain me the working principle of period tube. of pitot tube, sir. Hmm. Uh, So the we measure the stagnation pressure using the pitot tube. Like if in a pipe a certain water is flowing and we put a pitot tube there, then at that point the pressure will be the fluid will come to rest, and this pressure will be equal to the pressure thermodynamic pressure plus the pressure of dynamic pressure. So the fluid Okay. flows into the pitot And tube. and what is that particular point called where the velocity becomes zero? So stagnation point. Stagnation point. And what is stagnation head? Uh, Sir, I think I'm assuming that the stagnation head is the head required to stop the flow of fluid. Okay. Okay, explain me the cavitation phenomena. Sir, when the pressure of a fluid falls below the vapor pressure at a certain Hmm. temperature, the Hmm. fluid locally vaporizes, and when there is an increase in pressure, these bubbles form implode. So the pressure waves are created which hit the pipe or the impeller wherever the cavitation happens. This phenomena is called cavitation. Okay. Okay, how does the Navier-Stokes equation is different from the Bernoulli's equation? Sir, I think Navier-Stokes equation considers the uh, all the forces, I think, and
like elastic forces and pressure forces and turbulent forces as well. But Bernoulli equation considers only these pressure forces and gravitational forces. Okay. 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 Just tell me one thing. What is uniform flow and what is non-uniform flow? Sir, the change in flow parameters like velocity, density, etc., with respect Hmm. to distances are there, with respect to Hmm. positions are there in non-uniform flow. But in uniform flow, there are no deviations as such with respect to positions. Okay. And what about the rotational and irrotational flow? Sir, when viscous effects are present, we see a rotational flow. Uh, for uh, for an ideal fluid, there will be no rotations. If viscosity is What present, kind there of rotation? are rotations about the axis of the fluid particles. Like Rotation if two about the layers axis are of the flowing flow. one end above the other, this the above layer will try to push the below layer, and this Hmm. will cause the rotation of the fluid particles. Okay, that is okay. And how do you calculate the rotation? Do you know the mathematical formula? Sir, I think mm, curl of the velocity divided by 2 gives the rotation. Okay, that is okay. Okay, just tell me one thing. What is vortex flow? What is Vortex flow, vortex. vortex flow? Sir, I think this formula gives the vorticity. I'm not sure about vortex. I think it is like the fluid curls about or rotations are there in the fluid motion. Like when in orifice meter we see when there is a flow separation at that outlet of the pipe, there are circles formed of like that is I think vorticity. ओके ओके उत्कर्ष लेट मी प्रोवाइड फीडबैक देखो आपके पास आप आईओसीएल के लिए जा रहे हो कैंपस प्लेसमेंट है थोड़ा सा ना आपको जैसे अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है कन्वे करने में तो आप हिंदी को यूज करो ठीक है ना फाइनल इंटरव्यू इस वजह से प्रॉपर नहीं मिक्स आप यहाँ पे कर सकते हो ठीक है और सेकंड चीज आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करो ठीक है ना क्योंकि आईओसीएल में ज्यादा से डिटेल में पूछा नहीं जाता हम्म, बेसिक बेसिक आपका सारे सब्जेक्ट का पता होना चाहिए तो बेसिक डेफिनेशन जो आपका सारे टॉपिक की है चाहे फ्लूइड स्टैटिक की हो चाहे फ्लूइड काइनेमेटिक्स हो चाहे फ्लूइड डायनामिक्स की बेसिक डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाना क्योंकि वो लुब्रिकेटिंग ऑयल से डील करते हैं तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले तो फ्यूल्स के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है ठीक है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको भी जरूर देखना और ये भी चेक करना कि विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है ठीक है विस्कोसिटी मॉडिफायर्स हम यूज करते हैं विस्कोसिटी को कंट्रोल करने के लिए उनका मेन पर्पस क्या है उसको भी एक बार जरूर अच्छे से गो थ्रू करना ठीक है ना बाकी आपके पास यहाँ पे बाकी जो मुझे आंसर प्रोवाइड कर रहे हो ठीक प्रोवाइड कर रहे हो बस थोड़ी सी रिवीजन की रिक्वायरमेंट है ठीक है और आपके पास यहाँ पे रिवीजन के साथ साथ थोड़ा सा डिलीवरी पार्ट को इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है ओके एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क कोई क्वेश्चन में डाउट हो भी आपको जो मैंने आपसे पूछे सर एक तो था सर वो मेनली इंटर्नशिप से पूछते हैं तो टरबाइंस एंड कंप्रेसर वाले पार्ट में कहाँ से पढ़ सकता हूँ टरबाइन एंड कंप्रेसर बिकॉज सर दे वर कौन सी देयर। टरबाइन में कर रहा है कौन सी टरबाइन में सर स्टीम मैंने टरबाइन है हाइड्रोलिक गेल में इंटर्नशिप की थी तो वहाँ पे एब्जॉर्बर कॉलम का जो प्रेशर होता है उसको रिड्यूस करने के लिए टरबाइंस यूज करते थे। कौन सी टरबाइन यूज कर रहे थे सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट सर, आई विल सी वंस। ठीक है एक काम करना आपके पास यहाँ पे हाइड्रोलिक टरबाइंस में इम्पल्स और रिएक्शन को अच्छे से पढ़ के जाना और स्टीम टरबाइन को पढ़ के जाना आपने कंप्रेसर का नाम दिया तो आपका स्टीम टरबाइन कंप्रेसर अच्छे से पढ़ के जाओ अगर आपने रिएक्शन टरबाइन समझ ली रिएक्शन टरबाइन अगर आप समझ चुके हो फ्रांसिस टरबाइन अच्छे से तो आपके पास यहाँ पे स्टीम टरबाइन पूरा का पूरा कवर अप कर लोगे हाइड्रोलिक टरबाइंस पूरा कवर अप हो जाएगा अगर आपने फ्रांसिस टरबाइन पढ़ लिया अच्छे से तो आपका कंप्रेसर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपका पंप भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ओके ठीक है ना बस चीज यही है कि आपको फ्रांसिस टरबाइन को अच्छे से समझना होगा ओके सर। वही एक टॉपिक है क्योंकि बाकी से ही सेम कंसेप्ट आपके स्टीम टरबाइन में यूज होंगे और उसके ठीक एग्जैक्टली अपोजिट कंसेप्ट यूज होंगे पंप और कंप्रेसर ओके ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान रखना फर्क बस है आपके पास यहाँ पे उसमें क्या बोलते हैं आपके पास वर्किंग फ्लूइड की डिफरेंस वर्किंग फ्लूइड में फर्क है और कुछ किसी में फर्क नहीं ठीक है तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा क्योंकि क्वेश्चन अगर आपने इंटर्नशिप करी तो क्वेश्चन वहीं से बनेगा आपके पास मेजोरिटी हाँ सर। और क्योंकि ये टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग तभी मुझे सुन के बड़ी हंसी है कि ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है तो क्वेश्चन वहीं से बनेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को ओके टरबाइन और कंप्रेसर अच्छे से बनेंगे ओके ओके उत्कर्ष नाउ यू कैन लीव द मीटिंग और कोई डाउट तो नहीं है ना नहीं सर। ओके